Okay, so this is what we are going to discuss now. So maximum and minimum values of a quadratic expression. So was I am talking about ax square plus bx plus c. So इसका maximum और minimum value हमें decide करना है. Okay, right champs? So देखो पहले तो मैं आपको कोई restriction ही नहीं दे रहा. Restriction in the sense x पर कोई भी restriction नहीं है. Here x belongs to entire set of real numbers. Okay, so here x belongs to R. Okay, then what will happen when we talk about maximum or minimum values? So there are cases like case 1. I am assuming that leading coefficient is positive. This is what I am thinking. Here I am taking leading coefficient as positive. So you can recall when the leading coefficient was positive, graph was opening upwards, right? So in this case, see, I don't care इसके solutions real है, imaginary है, real and equal है, real and distinct है, it doesn't matter. Here what is more important कि मेरा lower या upper bound जो भी होगा वो क्या होगा. So when the coefficient of x square is positive, your graph is like opening upwards. उसका कुछ ऐसा shape होता था. I hope this part is okay, right? अब ये ग्राफ above x axis हो सकता है, ये ग्राफ below x axis हो सकता है, ऐसे जा सकता है, तो कुछ भी possibilities हो सकती है ना यार, राइट. बट मेरे लिए वो मैटर नहीं करता कि डिस्क्रिमिनेंट पार्ट क्या है, जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, डजंट मैटर. सो इफ यू लुक एट द ग्राफ, कैन यू से दैट कि सर इस ग्राफ में सर मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, ग्राफ इज गोइंग, इट्स मूविंग, राइट. ऐसे अनबाउंडेड कर्व है, राइट. Right, so you can say that when the leading coefficient in the quadratic expression is positive, remember there is no maxima because graph is unbounded, so you can see it keeps on going, so you can't decide what is the maximum value. That's why when the leading coefficient is positive, no maximum value. You say no maxima or no maximum, it's the same. I hope this part is okay. Only minimum value exists. Okay, only minimum value exists. तो चलो हमने एक चीज क्लियर कर दी, सर मैक्सिमम तो नहीं होगा, और अगर होगा तो केवल मिनिमम वैल्यू आएगी. नाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि वो मिनिमम वैल्यू क्या है. ओके, अच्छा, अगर आप आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर अगर रिकॉल करो, मे बी शायद फर्स्ट लेक्चर, जहां पर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक का रेडिकल फॉर्मूला निकाला था, इफ यू रिमेंबर, सो मैंने यहाँ पर बेटा ए कॉमन लिया था, फिर मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, यस क्रिश, क्लियर. So a common, so this becomes x plus b by 2a whole square, and I think if you take minus, so minus b square minus का 4ac upon में 4a square. Now beta, if you open the bracket, it becomes a into x plus b by 2a whole square minus b square minus 4ac upon 4a. We normally write this as d. So if I take this term on left hand side, so it becomes y plus d by 4a is equal to a into x plus b by 2a का square. Is that okay? Right? क्वेश्चन में देखा जाए, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि सर कैन यू राइट दिस एज माइनस का d बाई 4a, ये टर्म एज इट इज, प्लस a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, राइट. ऐसे भी लिख सकते हो ना.
सो अगर आपसे पूछे बॉस ए तो पॉजिटिव है, ओके, सो ए इज पॉजिटिव, अब माइनस डी बाई फोर है तो एक नंबर आएगा, ये नंबर नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है, व्हाट मैटर्स डी का वैल्यू मैटर्स, ओके। तो फिलहाल ये तो एक कांस्टेंट है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, सी जो ऐड वाला पार्ट है वो वेरिएबल है बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, सो व्हेन एक्स कीप्स ऑन चेंजिंग obviously this value increases or decreases whatever. So because a positive है, this is a perfect square, can I say that from here y, अगर आपसे कोई इसका मिनिमम वैल्यू पूछेगा, मिनिमम वैल्यू, तो माइनस डी बाई फोर में जो ऐड हो रहा है आप उस पार्ट को मिनिमाइज करोगे, राइट। तो यहां पर जो चीज ऐड हो रही है माइनस के डी बाई फोर में उसको मिनिमाइज करोगे कि नहीं करोगे, यानी कि ये पार्ट को मिनिमाइज करोगे, एंड बिकॉज इट्स ए परफेक्ट स्क्वायर तो मैं इसको मिनिमाइज करके जीरो वैल्यू दे सकता हूँ। सो कैन वी से दैट y मिनिमम विल बी इक्वल टू माइनस का डी बाई फोर, इज दैट ओके? बेटा गर्दन हिला दो, एक्सरसाइज हो जाएगी तुम्हारी नेक की। एंड ये कब पॉसिबल है, when x plus b by 2a is 0, or you can say that when x is minus b by 2, is it clear? Okay, so तुमने कहा सर मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी बाई फोर, माई क्वेश्चन इज when क्या वैल्यू दो x को कि तुम्हें मिनिमम वैल्यू मिल जाए, तुमने कहा सर x को माइनस का b बाई टू ए दे दो, सर आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। मैंने कहा बेटा व्हाट अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू, तो तुमने कहा सर आप इसको मैक्सिमाइज करो फिर। मैंने कहा बेटा इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है बिकॉज x तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, यानी कि इसका कोई अपर बाउंड पॉसिबल नहीं है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट। सो बॉस इफ यू ऑब्जर्व द ग्राफ लाइक दिस, तो तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा ग्राफ इसके नीचे नहीं आ रहा, अब जो भी अलाइन है। सो ये वो पॉइंट है जहां पर x का वैल्यू माइनस बी बाई टू है और y का वैल्यू माइनस का डी बाई फोर है, तो ये पॉइंट है माइनस का b बाई टू है एंड माइनस का डी बाई फोर है, वी कॉल दिस पॉइंट एज वर्टेक्स। समझे मुन्ना? वी कॉल दिस पॉइंट एज वर्टेक्स। सो आप ये याद कर लो, फॉर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वॉट एवर ए पॉजिटिव नेगेटिव वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस नहीं होंगे, it will be of the same form minus b by 2a minus का d by 4a. So if the coefficient of x square is positive, then this is the minimum value, and this value is possible when x is minus b by 2a. The problem is, देखिए, let p of x, which is ax square plus bx plus 8, is a quadratic polynomial. So let p of x is a quadratic polynomial if the minimum value of p of x is 6 when x is equal to 2. So if the minimum value of p of x is 6 when x is 2, find the values of a and b. Yes, this is the right answer. A is equal to 1 by 2 and b is equal to minus 2. Perfect answer. Okay, so the question is, देखो a पॉजिटिव तो होगा, राइट, बिकॉज क्वेश्चन में मिनिमम की बात कर रहा है। सो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, अगर किसी का a नेगेटिव आ रहा है तो वो अवॉइड कर रहे हैं। Now it's a quadratic polynomial and the minimum value, so we know that minimum value होती है minus का d by 4a, that is 6, which is possible when minus का b by 2a is 2. I hope this part is clear. Now we got b is equal to minus 4a.
Now let's focus on this. Minus d का वैल्यू कितना हो जाएगा? That will be 4ac minus b square and upon में 4a is equal to 6. In this problem we have c का value is 8. So this means 4ac, तो 8 4 32. A minus b square is equal to, this is 24a. Okay, or 32 minus 24, that becomes how much? 6 to 8a is equal to b square. Or I can write this as 2 into 4a, which is equal to b square. What is 4a? 4a is equal to minus b. So we have b square is equal to minus का 2b, right? अब either b is 0 or b is minus 2. B can't be 0 because if b becomes 0 then a is also 0, which is not possible because quadratic expression कहा गया है. So leading coefficient can't be 0. So that's why b becomes minus 2. And if I take b is equal to minus 2, then a becomes 1 by 2. I hope everyone is okay.